Okay, start. Or let me share the screen. आज बहुत दिनों बाद online class फिर से. Okay, can you see this board? ये जो है ना ये screen तुम देख सकते हो? Yes, sir. Yes. जो मैं लिख रहा हूँ अभी मैं जब कुछ लिखूंगा क्या तुम्हें देख सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक से? Yes, sir. हाँ? Okay. Yes, sir. Okay, okay, okay. So चलो मैं जरा कलर चेंज करता हूँ इसको ब्लैक ही रखते हैं और इसको इरेज भी करते हैं. Okay. So okay, let me start जहाँ हमने last time खत्म किया था. हमने कुछ surfaces के बारे में बात की थी. So a surface was a function, a vector function that we usually define on an open set. You know, basically ये surface को हम study नहीं कर रहे हैं बल्कि surface को हम locally study कर रहे हैं in this course. So we can as well call it a surface patch. Basically, it's a surface patch. It's some part of a surface that we are going to deal with. But nevertheless, it is a function that's defined on an open set. Now, this is some open domain connected set. Let's call it that. Okay, to R3. Of course, तो इसको हम लिखते थे R is equal to R at UV, or since it is a space curve, it's a surface, so it depends upon two parameters and it lives inside R3. यानी इसका x coordinate है, इसका y coordinate है और इसका z coordinate है. This is some open set. Now it's some x coordinate which depends upon UV. यहाँ पहले ही कर चुके हैं. It has a y coordinate that depends upon these two independent parameters, and it has a z coordinate that also depends upon it. Then we also talked about, what do we mean by partial derivative of the surface? It means that you differentiate each of the coordinates with respect to u partially because they are in general functions of two variables. जैसा कि हमने लिया था surface की या parabola की, जैसे parabola जो अपना paraboloid जो surface है, that's of this form. उसका x coordinate u v and then z coordinate is u square plus v square. Similarly, we talked about our sphere that was cos u, cos v, cos u, sine v, and then sine of u. So this would be our parameterization of a surface, and then we showed there can be more than one parameterization. And then we also talked about what is a regular point. A regular point is one where this cross product of partial derivatives of the surface at that point is not a zero vector, which basically, okay, then of course if a point is not regular, then it is singular. So we discussed those things, and then we imposed a condition of a change of parameters. Now if we have another parameters u prime, v prime, which are which are related to the original parameters by means of two functions, say phi uv and v prime equal to psi of uv. If these are our change of parameters equations, then in order that regular point is always mapped to the regular point under this parameterization, the condition was that the Jacobian determinant of this transformation is non-zero, or this determinant del phi by del u del phi by del v और दूसरा रो del psi by del u del psi by del v is non-zero. Now this was our requirement for a change of parameters such that regularity doesn't change. इसके आगे हम आज करेंगे, और यूजुअली मैं जो भी कह रहा हूँ हम एक सरफेस पैच को स्टडी करेंगे. I would draw it in this manner. So this would be my x coordinate, this my y axis, and then z axis. So this x axis means it's coming out of the screen for you. But we have discussed that in the class. So मेरा जो surface patch हो, I would usually draw it like this. So imagine that this is a surface patch, मतलब it's a
part, a small part of our surface that we are studying, that is, hanging in this XYZ space. So this would be our picture that I'm going to draw again and again. So let's see what we are going to do today. So first we write down this definition. पता नहीं इसको क्या ये क्यों हो रहा है इसको बार-बार. Okay. So पहले जो हम करेंगे, we are going to define what we call the parametric curves of the surface. Okay, now we know that a surface. So let me write down it first. Now let R given by R, depending upon these two independent parameters, be the equation of a surface of course we say defined on some domain inside our UV plane, defined on. वालेकुम सलाम. तो ये बहुत छोटा है, हमें दिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आप किस पे देख रहे हो ये? सब मोबाइल पे, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है. नहीं, अब इस पे पहुंचना भी चाहिए ना. प्रॉब्लम ये है. तो ये आई डोंट नो, कैन यू सी इट? जस्ट मिनट, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरा स्क्रीन थोड़ा बड़ा है ना, मैं इसको लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, तो मुझे तो ठीक लग रहा है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली तुम बाद में इसको फिर से देख लेना ना, जब मैं इसको अपलोड करूँ. ठीक है? ओके. तो फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा. लेट R इज इक्वल, अब ठीक है, R at UV be a surface, अगर ये surface है, defined on some domain D, defined on some domain D, let's call it D. Now if we keep one of the parameters constant, now you know that at each point, so we can think somewhere we have got these pairs of numbers, what we call our UV plane. So ये इसकी domain है, and इसका जो under this map we are getting one of this R maps this portion to this surface in R3. तो ये मेरे UV coordinates हैं. तो R at UV gives some X, Y, Z points in my R3 space, और जहाँ पे ये surface है. अब अगर मैं इस surface में क्या करूँ? Of course, if I can, when I change U and V throughout this patch, I get all the points on this surface. Now suppose I keep one of them constant and let only one of the variables change. What would happen? जो set of points यहाँ पे होगा, they will then depend only upon one variable, because I'm keeping one variable constant. So when something depends upon only one variable, it would give me a curve on the surface. So if I redraw this surface here, it's the same thing. So what I would get a curve. So if I keep one of the variables constant, and I call those curves, those special curves on the surface, which are given when I keep one of the variables in the equation of the surface constant, we call them parametric curves. So by keeping U and V constant, U और V दोनों में से एक को अगर हम constant रखें, वो दूसरे को vary करे, we get curves of special importance on the surface. We get curves of special importance on the surface called the parametric curves. Called the parametric curves. Now, if V is equal to constant, if V कोई constant है, then say, then the curve होगी, then R
is equal to r uc, क्योंकि इसका एक variable constant है, is one of the parametric curves. So it would be like something like this, a curve on the surface, and then I would have another set of curves जिसमें u constant होगा. अगर v constant होगा, मान लो u constant वाली curves ये है, तो we call them u curves. So this describes a curve on the surface called u curve, obviously enough, क्योंकि इसका variable जो है वो u curve. Similarly I will get a v curve. Okay. Similarly, r is equal to r, some constant u is constant, is a v curve on the surface. So both these un and v curves provided a sort of a एक तरह का एक ढांचा जो सरफेस का है वो हमें मिलता है इन दो कर्व से, ठीक है ना. इज अ वी कर्व, मतलब तो इसको वी कर्व कहेंगे क्योंकि वेरिएबल अपना v है, ठीक है. नाउ द टेंजेंट टू दिस u कर्व, द टेंजेंट टू द u कर्व जो होगा, नाउ u कर्व में क्या है, आई कैन थिंक ऑफ इट r, देखो r मेरी कर्व है, u कांस्टेंट है या v कांस्टेंट है, जो मेरी u कर्व है वो ऐसे है. So it can be sort of r is equal to r at u, क्योंकि c मतलब c is constant, यानी इसका तो कोई रोल ही नहीं है इस कर्व के जनरेट होने में. तो अगर मुझे इसका टेंजेंट निकालना है, तो जैसे मैं दूसरी कर्व्स का टेंजेंट निकालता हूँ, तो फिर मैं करता हूँ डिफरेंशिएट. सो मुझे dr by du निकालना होगा, तो वो इसका टेंजेंट होगा, राइट. बट दैट वुड बी द सेम थिंग एज, है ना, that would be the same thing as taking the partial derivative of r with respect to u. मतलब जब मैं r, मतलब एक्चुअली जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी इक्वेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स का, तो बेसिकली हम यही करते हैं, हम दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं. तो अगर मैं दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानता हूं, तो टेंजेंट टू द कर्व होगा, इट वुड बी गिवन बाय द डेरिवेटिव with respect to the variable that's changing and on which the set of points depends. So that would be the same as r sub u. तो वही मैं यहाँ लिखूंगा, मतलब it's rather obvious क्योंकि partial derivative by definition is the one in which we take derivative and treat other variables as constant. So the tangent to the u curve will be along the direction r sub u, and the tangent to the v curve will be along the partial derivative r sub v, क्योंकि वहां u constant है और यहाँ पे v constant है, right? And since for a regular point, and और हम regular points को ही study करेंगे, since for a regular point जो condition है वो क्या है, वो ये है कि ru cross rv cannot be equal to 0 vector. That means अगर ऐसा है तो u curves and v curves, cannot be tangential to each, cannot touch each other. तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो टच करेंगे तो उनके टेंजेंट सेम हो जाएंगे. बाय टचिंग आई मीन बीइंग टेंजेंशियल टू ईच अदर. तो अगर इस तरह से चलो मैं फिगर बनाता हूँ थोड़ी सी बड़ी. सो ये मान लो अपना सरफेस पैच है, मैंने इसको मैग्नीफाई किया है, इस पे कुछ स्पेशल कर्व्स है जिसको मैंने कहा यू कर्व्स, मान लो इस तरह से. तो और मान लो वी कर्व्स हैं जो कि इस तरह से, और यू कर्व्स का वेक्टर जो है ना टेंजेंट वेक्टर, तो दैट इज अलोंग दिस r sub u वेक्टर, और इसका जो टेंजेंट वेक्टर है v कर्व्स एट अ सर्टेन पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन rv.
अब बाय डेफिनेशन हमें जब ये बताया गया है कि आर यू क्रॉस आर पी इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहली बात तो ये है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये जो इस तरह से नहीं हो सकता कि आर यू और आर यू अगर आर वी की डायरेक्शन में हो, मतलब आपस में पैरेलल हो, मतलब इस तरह से आर यू हो ये कर्व भी इसी तरह से हो, तो क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलेगा। So since we are already imposing that condition that this does not happen, it means that ये जो set of parametric curves है, मेरी U curves और मेरी जो V curves इस तरह से है, वो मतलब ये जरूरी नहीं है इस तरह से उसका हो, मतलब it could be weird, मतलब किसी भी तरह की कर्व हो सकती है depending upon the surface, लेकिन हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा। The curves won't be tangential। हो सकता है ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे, मतलब it could have, मतलब एक और पिक्चर ऐसी हो सकती है possibly कि ऐसे हों, इस तरह से हों, इस तरह से हों, दूसरे दो सेट्स ऑफ कर्व्स, एक इस तरह से, दूसरी इस तरह से, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी किसी पॉइंट पे ये कर्व्स इस तरह से आ जाए, मेरी U curve and V curve, क्योंकि that would violate the definition of regularity। ओके, तो वही हमने अभी वर्ड्स में लिखा। ओके, furthermore हम sometimes surface क्या होता है, now if RU dot RV is equal to 0, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स का, then the of course then we say then देखो at a point P on the surface, मान लो ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। then the parametric curves are orthogonal। और कभी-कभी ये क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे हमें we get orthogonal set of curves like in certain parameterizations, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। and if this condition, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, if this condition is satisfied for all points in the domain D, then the two systems, ये जो U curves और B curves हैं, two systems of parametric curves, यानी U curves और parametric curves are orthogonal। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे तो बेसिकली हम प्लेन की ही ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं अपना प्लेन XY प्लेन, अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, है ना, एक तो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है। अगर मैं x को कांस्टेंट रखूं, x को कांस्टेंट, whenever I take x equal to constant, I get these lines which are perpendicular parallel to y axis। x मतलब यहाँ पे x कांस्टेंट है, कुछ नंबर है उसका, x यहाँ पर भी कांस्टेंट है, x इस लाइन पे भी कांस्टेंट है, यानी जो वर्टिकल लाइंस हैं उन पे जो x कोऑर्डिनेट है वही कांस्टेंट है। तो अगर मैं x को u मान लूं और y को मी मान लूं, तो ये मेरी होगी अपनी y कर्व, क्योंकि यहाँ पे y चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ along these vertical lines। So let me erase this, थोड़ा सा बेटर मैं बना दूं इसको। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, if I take my xy plane, तो इसकी जो पैरामीट्रिक कर्व्स होगी वो प्रिसाइसली, अगर मैं इसकी पैरामीटराइजेशन ये मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो अगर x एंड y मेरे uv है, मेरे u एंड v वेरिएबल्स हैं, तो इसकी u कर्व वो होगी जहां पे y कांस्टेंट है, यानी v कांस्टेंट, v means y, so those would be lines parallel to x axis। तो ये मेरी u कर्व्स होगी यहाँ पे, और इसकी जो v कर्व्स होंगी वो होगी लाइंस पैरेलल टू y axis। so these would be my v curves। तो v कर्व्स ये लाइंस है, u कर्व्स ये लाइंस है, और ऑफ कोर्स वो हर पॉइंट पे आपस में इन दिस केस ऑर्थोगोनल है। इन दिस केस u
डॉट आर वी इज इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा ये जो पैरामीट्रिक कर्व्स है वो एक तरह से हमें जो एक फ्रेम देती है सरफेस का। तो इसी तरह से अगर कोई सरफेस होगी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी किसी जगह, तो ये जो यू कर्व्स होंगी वो एक तरह से उस सरफेस का एक ढांचा बनाती है जिसपे मान लो हमने कपड़ा चढ़ा के फिर सरफेस बनाई हो। और ये इन्फिनिटली मेनी है, ऑफ कोर्स यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज मतलब along those curves one of the variables is constant, but I can also reparameterize my plane in terms of polar coordinates. Polar coordinates means I take r and theta as my coordinates, where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Right? ये चल रहा है? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. तो अगर मैं ये coordinates लूं तो भी मुझे इसकी पैरामीट्रिक कर्व्स होगी जहां पे r कांस्टेंट है। r कांस्टेंट मींस ये जो सर्कल्स इस तरह से हैं। तो दिस वुड बी वन सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स। मतलब इस तरह से भी मैं प्लेन का ढांचा बना सकता हूँ कि मैं ये सर्कल्स लूं और ये लाइंस लूं फ्रॉम द r, तो जो भी ये रेज हैं यहाँ पे दीज आर थीटा कर्व्स, नहीं दीज आर r कर्व्स, सॉरी, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा मींस ये जो एंगल है इस एक लाइन के साथ वो फिक्स्ड है इस लाइन पे, और यहाँ पे r फिक्स्ड है और थीटा वेरी हो रहा है। So this would be an r curve, this would be a theta curve, और ये जो लाइंस है they would be r curve। या थीटा चेंज हो रहा है along the circle और r फिक्स्ड है, तो ये भी एक सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स होगा in this form, यानी लाइंस from the origin। एक सेट ऑफ u कर्व्स हैं या जो भी तुम वेरिएबल को नाम देना चाहो, और मेरी जो ये सर्कल्स है concentric circle centered at origin, वो another set of parametric curves है। So in any case, what I'm trying to, you have to visualize this these set of parametric curves as providing some kind of frame over which the surface has been, you know, constructed. So next चीज हम करेंगे वो है, you know, the tangent plane at a point of a surface. मतलब that's rather obvious क्या होना चाहिए, लेकिन हम उसको पहले define करने की कोशिश करेंगे। So let again the equation of the surface be, अब इसी तरह से, okay, let me take, फिर से अगर मैं ये surface ऐसे बनाऊं, अब surface जो है जो भी हो उस पे मैं curve बना सकता हूँ। अब given any surface, मान लो मेरे पास एक sphere था, तो या कोई भी surface है, मान लो मेरे पास एक कोन है या कोई एक पीस है किसी surface का जैसे यहाँ पे है, तो उस पे एक curve draw कर सकते हैं, है ना? So अगर मैं इसको मतलब but I can look at curve independently. So ये जो curve है it's a space curve, मान लो ये इसकी surface गायब हो गई, सिर्फ curve है, तो इसको मैं treat कर सकता हूँ as a curve and it also lies on the surface. So it is part of the surface, you know, as a curve इसकी equation होगी of the type r is equal to r at t, जैसा कि हमें पता है, या यहाँ पे होगी r is equal to r at t, right? तो it would be जैसे कि हमें एक पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, but this also lies on the surface, so इसकी equation it should also satisfy r is equal to r at uv। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो इसके पैरामीटर है ये तो uv पे डिपेंड करेंगी, but u and v must be function of a single parameter because ultimately it is just a curve in r3, so therefore any equation, any curve on this surface would be of the type r is equal to r at ut, v at ut। मतलब it should be composition, you know, it should satisfy the equation of the surface, and of course it should also depend upon a single parameter। That means of course the surface के हिसाब से ये दो parameters पे depend करती है, लेकिन वो दो parameters should depend upon a single parameter। So that is when we think, this is how we think of a curve on a surface। So अब हम tangent plane को ऐसे define करेंगे कि मान लो हमने कोई कर्व बनाई सरफेस पे, तो उस कर्व का एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, है ना? लेकिन वो टेंजेंट जो है वो हमेशा एक प्लेन पे लाई करेगा जो हमारा उस पॉइंट के लिए टेंजेंट प्लेन होगा। सो उसी को हम वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे। सो लेट द इक्वेशन, जो मैंने अभी कहा इसको तुम अगर ध्यान में रखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that the equation of a curve
on a surface R is equal to R at V, R is equal to R at UV, B, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? It must then happen that U must be U of T and V must be V of T. And they must depend upon a single parameter. So अगर ऐसा है, then our curve होगा R is equal to R at U at T, V at T, and the tangent to the curve would be given by, जैसा कि होता है, tangent to the curve will be given by dr by dt, और यहाँ पे हम चेन रूल यूज करेंगे. सो r जो था वो बराबर था r composition of u t v at t, तो dr by dt होगा by chain rule del r by del u into du by dt plus del r by del v into dv by dt. So that means it is actually r sub u into du by dt plus r sub v into dv by dt. यानी मैं कह रहा हूँ हमारी एक सरफेस है, तो उस पे एक कर्व बनाई है, तो यहाँ पे उसका टेंजेंट है, राइट, और उसकी जो मतलब उसका एक इंक्रीजिंग सेंस हम लेंगे, मतलब जहां से हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है टी इन दिस डायरेक्शन, तो हमारा जो टेंजेंट होगा वो ये होगा वेक्टर, और इट वुड बी it can be written in this form because it lies on the surface r is equal to r at u. Okay, now since ru and rv are independent, now for a regular point या हम ऐसे मानते ही चलेंगे, सिर्फ ru cross rv is not equal to this zero vector, so therefore dr, now these are independent vectors, so they generate a plane. यहाँ पे अपना जो plane generate होगा, which would be generated by my r sub u, r sub v. क्योंकि linearly independent है, तो so what I'm trying to say, dr by dt will lie in the plane generated, spanned by ru and rv. Okay, so this tangent lies, and this is called, and this plane is called the tangent plane at this point uv, at r uv. तो इस तरह से सिचुएशन है, हमारे पास एक सरफेस थी, इधर पे कर्व थी, उस कर्व पे हमने टेंजेंट डाला, और ये टेंजेंट हमें पता है ये लाई करता है एक प्लेन में which is generated by ru cross rv, राइट, और यहाँ पे अपना पॉइंट है, ये जो इधर है, दिस इज r at uv, जहां पे टेंजेंट प्लेन बन रहा है. ओके, सो हेंस इफ r इस कैपिटल R, यानी मान लो R अब कोई भी पॉइंट है इस प्लेन पे, एनी पॉइंट, तो अगर इस प्लेन पे R कोई पॉइंट है, तो ये जो R, ये वाला R minus small r, this would be a vector that lies in this plane. So if R is any generic point, is the generic point, that means an arbitrary point, generic point, on the tangent plane to the surface, on the tangent plane to the surface at point small r is equal to r at uv,
then the equation of this plane should be given by equation of this tangent, or equation of the tangent plane is given by this r minus this small r dot product with ru cross r equal to 0. वो इस वजह से है, अब ये tangent plane है, it is generated by ru and rv. तो इसका मतलब ये जो ru cross rv होगा vector, this would be perpendicular to every point in this plane, and r minus r is any point on this plane. Any point on this plane can be I can take this vector, any point r minus r, so they lie in this plane. So they must be, if they lie inside the tangent plane, by the very definition that it is generated by ru and rv, ru cross rv should be perpendicular to the whole plane, in particular to this vector. So therefore the dot product should be 0, and hence this becomes the equation of the tangent plane at this point small r. Similarly, I can also think of this line that goes through this vector. So any line at this point which passes through this point is normal to this plane, and we call it normal to the tangent plane at this point. Or uski equation of course hogi, because it lies in, so it passes through small r. So let me write the definition. The definition is there. Normal to the surface at P at point P, that means R is equal to R at UV, specific point हम लेंगे, is the line passing through P, is the line passing through this point, line passing through P and perpendicular to the tangent plane at P. Tangent plane at P, and since thus, yes, thus if R is equal to, since it passes through R is equal to R at UV and is parallel, because it is perpendicular to the tangent plane, it must be parallel to RU cross RV. I've got a plane जिसका एक normal है RU cross RV. अब जो भी line इसको perpendicular होगी, right? मतलब यहाँ पे it is parallel to this vector. So therefore its equation will be given by capital R is equal to the small r plus lambda times RU cross RV, where lambda is a parameter for this plane. Okay, so that is the definition of the normal to the plane. And if हम ये लिख सकते हैं remark में कि अगर or should I stop here? ये बंद होने वाला है, लेकिन मैं तुम में से किसी को पूछना चाहूंगा, कहीं पे आप